Good morning guys, it's an all new day. We're headed on our way to Nainital. We've stopped at a viewpoint which also has Mansa Devi Mandir. A lot of people around clicking pictures and lots of cars. I think आज since Sunday है तो काफ़ी भीड़ होने वाली नैनीताल में, let's see. Now, क्योंकि हमारी फाइनल डेस्टिनेशन आज काठ गोदाम है तो हम नैनीताल को पूरा तो नहीं एक्सप्लोर करने वाले, बट वी आर जस्ट ट्राइंग टू कवर अप अ फ्यू पॉइंट्स इन बिटवीन. So we've stopped on our way to see the eco caves. अलग-अलग जानवर तथा पक्षी आपके स्वागत के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. व्यू पॉइंट्स क्रॉस करते हुए हम जा पहुंचे हमारे फर्स्ट स्टॉप इको केव गार्डन्स पे, विच आर एक्चुअली नेचुरल केव्स. नॉट टू वरी, अब यहाँ जानवर तो नहीं है, बट दिस प्लेस विल श्योरली गिव यू ऑथेंटिक वाइब्स ऑफ देयर एक्चुअल हैबिटेट. बीच बीच में सीढ़ियाँ बनी हुई है, सो इट मेक्स इट ईजियर टू गो देयर. पर जहाँ पत्थर क्रॉस करके जाना वहाँ टफ हो रहा है थोड़ा सा. Yes, a word of caution, अगर आप बहुत ज़्यादा थकना नहीं चाहते then you might want to skip this place altogether because cave gardens में चलना फिरना अपने आप में काफ़ी strenuous activity है. These caves are really scary. आसपास पूरा जंगल है and then in between that आपको leopard और बाघ की आवाज़ आ रही है. These are the porcupine caves. Much less scarier than the tiger and leopard वाला, because वहाँ पे आवाज़ ऐसी आ रही थी. And since यहाँ lights लगे हैं तो थोड़ा डर कम लग रहा है. These caves took too much of time, but they're worth. It takes you 100 rupees to get inside, by the way, if you want to know. And we are on to our Flying Fox Cave जो उल्टा आ रहा है अभी. There, we are on to the Flying Fox Cave. तो यहाँ 6 इंटरकनेक्टेड गुफाएं हैं जो काफ़ी वेल मेंटेन्ड हैं, and the kids would absolutely love this place. Also this food point up there. There's also this beautiful viewpoint and a mini playground for kids. Final verdict, it's a must-visit place. गुफाओं को बाय बाय करके हम पहुंच गए मां नैना के दर्शन करने नैना देवी मंदिर, which is just almost 2 kilometers from Eco Cave Gardens. नैना देवी मंदिर नैनीताल लेक के बिल्कुल साथ में बना हुआ है. In case you didn't know, मां नैना देवी का ये मंदिर 51 शक्ति पीठों में से एक है, which makes it of great significance to the Hindu devotees. ये टेम्पल अपने आप में बहुत खूबसूरत है, but what makes it more beautiful is that it's situated just next to the Nainital lake and offers beautiful views of the valley. Apparently, one can see huge fishes on the shore of the lake. That was it for this video, guys. Hope you enjoyed it and also got an idea of how to spend your day in Nainital if you have little time on your hands. Be sure to subscribe to the channel and like the video if you really like it, and I'll soon see you in the next video. So beautiful.